हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 और बुक 2 का चैप्टर 26 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का प्रॉब्लम्स 11 to 13 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स IIT JEE नीट एंड अदर +2 लेवल के इंट्रेंसेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नाउ प्रॉब्लम नंबर 11, ए गैस इज टेकन थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस ABCA as shown in figure 26 E6. If 2.4 calorie of heat is given in the process, what is the value of mechanical equivalent of heat, that is J? एक गैस को साइक्लिक प्रोसेस ABCA के लॉन्ग ले जाया जाता है, जो कि इनिशियल पॉइंट A से स्टार्ट होकर के इन लास्ट फिर A पर जाकर बैक हो जाता है, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में 2.4 कैलोरी हीट सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट दैट इज कैपिटल J का वैल्यू कितना होगा उसे फाइंड करना है। इस साइक्लिक प्रोसेस ABCA को फिगर 26 E6 के पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें प्रेशर को एक्स एक्सिस के लॉन्ग किलो पास्कल में एक्सप्रेस किया गया है, जबकि वॉल्यूम को वाई एक्सिस के लॉन्ग सीसी में एक्सप्रेस किया गया है, सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वर्क डन in this cyclic process. We know that in a cyclic process work done is equal to the area under PV diagram. हम जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है सिस्टम के द्वारा या सिस्टम पर, वह पीवी डायग्राम के एरिया से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस पीवी डायग्राम में, जिसे फिगर 26 E6 में रिप्रेजेंट किया गया है, इस पीवी डायग्राम में जो साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब जो क्लोज पाथ है ABCA, वह एक ट्रायंगल है। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल वर्क डन होगा, सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन होगा इंटायर सर्किल में, क्लोज पाथ में, वह हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। सो वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस इज W equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC equals to 1/2. एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1/2 into base into height. Base is AB, path AB is the base, while path AC is the height. So half AB into AC is equal to half AB. Path AB is पॉइंट A के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर है 100 किलो पास्कल, पॉइंट B के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर है 200 किलो पास्कल। दैट इज AB पाथ के लॉन्ग जो नेट प्रेशर होगा वह होगा कितना, 100 किलो पास्कल का। दैट इज 200 minus 100, दैट इज 100 किलो पास्कल। So AB is equal to 100 kilo pascal, that is 100 into 10 to power 3 multiplied by AC. AC के लॉन्ग मतलब जो ट्रायंगल का हाइट AC है, तो A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 500 है, 6 और C पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 700 cc है। तो जो चेंज इन वॉल्यूम वह दैट इज साइड AC का जो या AC पाथ का जो लेंथ होगा वह, और ट्रायंगल का हाइट वह कितना होगा, 200 cc का होगा। 500 and 700, that is difference is 200, so it is 200 multiplied by cc है, तो 200 multiplied by 10 to the power -6 meter cube. Now it is 10 to power +3 into 10 to power -6 कैंसिल होकर के 10 to power -3 वहाँ बचेगा 10 to power -6 का पावर में, एंड 200 का 20 मतलब
00 एंड 100 का 10 से दैट इज 10 टू पावर 3 हो जाएगा, 100 इंटू 10 दैट इज 10 टू पावर 3 से 10 टू पावर -3 का 10 टू पावर -3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार अब 2 से फिर अब जो 2 बचा है न्यूमरेटर में वह कैंसिल हो गया, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इन वन कंप्लीट साइकिल इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 मल्टीप्लाई सॉरी ओनली 10, 2 तो कैंसिल हो गया, दैट इज 10 जूल। साइक्लिक प्रोसेस दैट इज क्लोज पाथ ABCA जो कि ट्रायंगल है, उसके अलाउंग नेट वर्क डन कितना हो गया, 10 जूल का हो गया। अल्टरनेटली इसे हम सॉल्व कर सकते थे, नेट वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल ABCA दैट इज WABC इक्वल टू वर्क डन अलोंग AB जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर 500 सीसी पर है, 500 सीसी पर आइसोकोरिक प्रोसेस है, प्रेशर चेंज कर रहा है इनके 100 किलो पास्कल से 200 किलो पास्कल, तो लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0 since change in volume is 0 and we know that work done at constant pressure P is equal to P multiplied by delta V, that is change in volume. So change in volume is 0 since this is path AB is path AB or change AB or path AB is isocoric process, so work done along path WAB is equal to 0, but along path BC volume increases from 500 cc to 700 cc, so and corresponding to point B pressure is 200 kilopascal and corresponding to point C pressure is 100 kilopascal, so we have to take average pressure that is 100 plus 200 upon 2 multiplied by 10 to power 3 that is किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड चेंज इन वॉल्यूम जो कि इंक्रीज के रूप में है, तो वह 500 सीसी से 700 सीसी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग 500 सीसी, सी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 700 सीसी, सो 200 सीसी का चेंज होगा, दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -6, तो बीसी पाथ के लॉन्ग वर्क डन हो जाएगा। अल्टरनेटली हम इसे कर सकते थे, जो सेकेंड मेथड है टोटल वर्क डन अलोंग पाथ ABCA is equal to WAB plus WBC plus WCA. WAB वर्क डन अलोंग AB एट कांस्टेंट वॉल्यूम 500 सीसी, तो वॉल्यूम में चेंज ही नहीं है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वर्क डन का होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम, तो AB के अलोंग तो वर्क डन 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस BC के लॉन्ग वर्क डन कितना हो जाएगा, BC के लॉन्ग वर्क डन हो जाएगा प्रेशर के लिए एवरेज प्रेशर B, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर एक्सिस B पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर 200 किलो पास्कल है एंड C पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर 100 किलो पास्कल है, तो यहाँ पर प्रेशर जब का वैल्यू रिड्यूस होता है 200 किलो पास्कल से 100 किलो पास्कल C के कॉरस्पॉन्डिंग, तो वॉल्यूम में क्या होगा, प्रेशर घट रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है 200 सीसी से 500 सीसी से वॉल्यूम 700 सीसी, तो एवरेज प्रेशर हो गया कितना, BC पाथ के लॉन्ग जो वर्क डन होगा, वर्क डन अलोंग पाथ BC इक्वल्स टू एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम अलोंग BC दैट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम अलोंग AC, सो एवरेज प्रेशर इज 100 किलो पास्कल प्लस 200 किलो पास्कल, दैट इज 100 प्लस 200 अपॉन 2 एवरेज प्रेशर हो गया, और किलो के लिए 10 टू पावर मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3 ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम जो है 700 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम 700 minus 500 that is 200 cc and in meter cube it is 200 multiplied by 10 to power -6, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, टोटल जो वैल्यू आ जाएगा WBC वह हो जाएगा कितना, वह वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं, वह वैल्यू हो जाएगा कितना 30 जूल का हो जाएगा, तो 30 जूल जो कि पॉजिटिव वर्क डन होगा, जबकि सीए पाथ के लॉन्ग जो यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम फॉल कर रहा है 700 सीसी से 500 सीसी से, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर 100 किलो पास्कल के लॉन्ग के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर गैस जो है क्योंकि वॉल्यूम उसका रिड्यूस हो रहा है, तो गैस कंप्रेस्ड हो रही है, इस पार्ट में वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो यह वर्क डन हो जाएगा कितना, कांस्टेंट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर इज 100 किलो पास्कल दैट इज 100 इंटू 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम 500
minus 700 cc, that is 500 minus 700 multiplied by 10 to power minus 6, that is minus 200. Change in volume minus 200 into 10 to power minus 6 मीटर क्यूब. सो सी ए पार्ट में जो वर्क डन होगा वह निगेटिव हो जाएगा. तो कुल मिलाकर के 100 किलो पास्कल 100 इंटू 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 200 इंटू 10 टू पावर माइनस 6. तो कैंसिलेशन के बाद यह वर्क डन माइनस 20 जूल आ जाएगा. तो इस प्रकार 30 जूल माइनस 20 जूल, दैट इज ए बी पार्ट में तो वर्क डन जीरो है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, दैट इज 30 जूल माइनस 20 जूल, दैट इज 10 जूल. So work done, total work done along the path, closed path A B C A is net work done कितना हो गया 10 जूल का. So net work done 10 जूल. और इसमें भी एरिया अंडर ट्रायंगल लेकर के इजीली हमने 10 जूल ऑब्टेन किया था. तो यह जो प्रोसेस है एरिया अंडर साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, वह एरिया अंडर पीवी डायग्राम से इजीली कैलकुलेट हो जाता है कम समय में. तो W इक्वल टू 10 जूल. और अल्टरनेटली हमने वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर P इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाई चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके भी हमने कैलकुलेट किया. नेट वर्क डन along the complete cycle is 10 joule. Now it is given that 2.4 calorie of heat is given in the process. मतलब 2.4 कैलोरी हीट यहाँ सप्लाई किया गया है, हीट सप्लाई किया गया है. क्यों कितना 2.4 कैलोरी, जिससे कि वर्क डन कितना हो गया 10 जूल का वर्क डन हो गया. तो हम जानते हैं वी नो दैट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J इक्वल टू W वर्क इन जूल बाय हीट सप्लाइड इन कैलोरी, दैट इज W अपॉन Q, दैट इज W इज 10 अपॉन कैलोरी. मतलब वर्क डन इज 10 जूल नेट वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल, एंड हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज 2.4, दैट इज 100 by 24. 10 upon 2.4 can be written as 100 by 24, and it is 4.100 से 24 में डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली, और या कैंसिल करा कर भी करें तो रिजल्ट सेम आएगा 4.17 जूल पर कैलोरी. यूनिट ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J जूल पर कैलोरी, एंड आंसर इज J इक्वल टू W by Q, that is 10 upon 10 joule work upon 2.4 calorie, that is 100 by 24 joule per calorie is equal to 4.17 joule per calorie. This is the answer of this problem. Problem 12, which a substance is taken through the process ABC as shown in figure 26E7 in PV diagram. If the internal energy of the substance increases by 5000 joule and the heat of 2625 calorie is given to the system, calculate the value of J. इस प्रॉब्लम में एक सब्सटेंस को ABC प्रोसेस द्वारा इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट सी तक ले जाया जाता है, जिसे फिगर 26E7 में रिप्रेजेंट किया गया है पीवी डायग्राम में. यदि इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी सिस्टम का गैस का इंटरनल एनर्जी 5000 जूल से इंक्रीज करता है एंड सिस्टम को 2625 कैलोरी हीट सप्लाई किया जाता है, जिसके कारण उसका इंटरनल एनर्जी 500 जूल से इंक्रीज कर गया. तो इस प्रोसेस में मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम. Heat supplied to the system in calorie delta Q equals to 2625 calorie, 2625 calorie, and increase in internal energy from this heat, internal increase in internal energy of the system from this heat is also given in joule, 500 joule.
we have to calculate work done by the system in this process, and then we will able to find the value of joule. We have to find the work done in joule, and the ratio of joule and calorie is we know mechanical equivalent of heat, J. So work done in the process ABC, that is along path ABC, work done along path AB plus work done along path BC. But work done along path BC is isochoric process at constant volume 0.05 meter cube. So work done along path BC will be 0. So we have only work done along path AB at constant pressure 200 kilopascal. Volume of the system increases from 0.02 meter cube to 0.05 meter cube. So yeah, so it is a it is a isobaric process. आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम, सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करता है. तो यहाँ पर 200 किलो पास्कल जो कि प्रेशर है वाई एक्सिस के लॉन्ग, प्रेशर को वाई एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया है किलो पास्कल में इस पीवी डायग्राम में फिगर 26E7 का, जबकि वॉल्यूम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया है सीसी में, इन सीसी. सो वर्क डन अलोंग पाथ एपी एट कांस्टेंट प्रेशर इज pressure P, that is 200 kilopascal multiplied by change in volume is delta V is final volume 0.05 minus 0.02, that is 0.03 meter cube, and pressure is 200 kilopascal is 200 multiplied by 10 to power 3 pascal. So constant pressure 200 kilopascal पर सिस्टम का वॉल्यूम 0.8 के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 0.02 मीटर क्यू है, जबकि पॉइंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग 0.05 मीटर क्यू है. तो चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पर. सो टोटल वर्क डन इन दिस सिस्टम, दैट इज वर्क डन अलोंग द प्रोसेस ABC, WABC इक्वल्स टू, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डेल्टा W एज इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग AB प्लस वर्क डन अलोंग BC path BC, and work done along path AB is pressure multiplied by change in volume. We know the formula. So pressure is 200 kilopascal, and gas expands from 0.02 meter cube to 0.05 meter cube volume. Sorry, at constant pressure 200 kilopascal, the volume of the gas, that is gas expands from its initial volume 0.02 meter cube to 0.05 meter cube. So work done along path AB is equal to 200, pressure is 200 into 10 to the power 3, 200 kilopascal can be written as 200 multiplied by 10 to the power 3 multiplied by change in volume, that is change in volume is 0.05 minus 0.02 meter cube, and work done along path BC is at constant volume 0.05 meter cube, that is isochoric process, change in volume is 0. So work done by the system gas is 0 along path WBC. So WBC is 0. So only along path AB work is done by the system. So it is 200 into 10 to the power 3 multiplied by 0.05 minus 0.02, that is 0.03, and it is 6000. 10 to the power 3 से 2 प्लेस पर डिसिमल है यहाँ 0.03, तो 3/100 हम लिख सकते हैं. 0.03 3/100, दैट इज 3/10 स्क्वायर से 10 to the power 3 का एक पावर का 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो एक पावर बचेगा. तो दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 3 इज 30. सो इट इज 200 into 30 इक्वल टू 6000 जूल, जो कि work done by the system है along this entire process, because it is work done along path AB 6000 joule, because work done along path BC is 0. So net work done along this process ABC is WAB plus WBC, that is 6000 joule plus 0, that is 6000 joule. So it is delta W. And this is this work done is in joule. Initially heat was given to the system 2625 calorie heat. So in
amount of heat supplied to the system in calorie, and along this PV diagram, that is with the help of figure we have calculated the value of work done by the gas, by the system in this process is 6000 joule. So amount of heat given to the system was 2625 in calorie heat, and result is 6000. Result is from this heat the gas, the internal energy of the system, that is gas, increases by 5000 joule, and remaining part of it is utilized in work done by the system, which is 6000 joule. So टोटल हीट कितना हो गया, टोटल हीट का जो यूटिलाइज हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में, वह कितना है 500 जूल प्लस 600 जूल, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, we have delta Q equals to delta U plus delta W. Delta U is 5000 joule and delta W is from this graph PV diagram 6000 joule, that is 11000 joule total. So total amount of heat is 11,000 joule, that is delta Q is equal to 5000 joule delta U plus delta W. इंटरनल एनर्जी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी 5000 जूल का है, जबकि वर्क डन हो गया 6000 जूल से. और यह सब हुआ किस हीट से, जो कि कैलोरी में हीट सप्लाई किया गया था सिस्टम को 2625 कैलोरी हीट, उसी से हुआ. तो हम जानते हैं कि जूल एंड कैलोरी का रेशियो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है. तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट G इक्वल्स टू heat in total amount of heat energy in which is utilized in to increase in internal energy, and work done is 11,000 joule. So it is 11,000 joule delta U plus delta W upon heat given, it is joule, and heat supplied initially to the system in calorie. So ratio of joule upon calorie is 11,000 joule upon 2625 calorie, and after dividing 11,000 joule from 2625 calorie, we can obtain the value of J as 4.19 joule per calorie. This is answer of this problem. Work done alternately, work done along path AB. Since work done along path BC is 0, isochronic process, so net work done जो हो रहा है इस PV डायग्राम में वह AB पाथ के along ही होगा. तो AB पाथ एंड वॉल्यूम एक्सिस के AB पाथ के अंदर AB पाथ एंड वॉल्यूम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वह रेक्टेंगल मतलब वह एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा. ये अगर हम इसको ए पॉइंट को ज्वाइन कर दें, अगर वॉल्यूम एक्सिस से कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 0.02 मीटर क्यूब, एंड बी पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दें हम वॉल्यूम एक्सिस पर कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 0.05 मीटर क्यूब, तो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है. और इस रेक्टेंगल का एरिया ही वर्क डन के इक्वल होगा. इस रेक्टेंगल का नाम रखा जा सकता है, ए बी तो है ही, यहाँ पर डी के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब 0.05 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम डी ले लें या एल ले लेते हैं, सपोज करते हैं एल पॉइंट है और यहाँ पॉइंट या डी ही सपोज किया जाए, डी पॉइंट, और यहाँ पर 0.02 मीटर क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी, दैट इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. So length is this distance ED, which is change in volume, that is ED is equal to 0.05 meter cube minus 0.02 meter cube, that is 0.03 meter cube, and breadth or height, this height is 200 kilopascal EA, that is breadth of this rectangle, or height
height of this rectangle is also distance. So it is 200 kilopascal. So 0.03 multiplied by 200 into 10 to power 3. Again it is 6000 joule. तो अल्टरनेटली हम पीवी डायग्राम में जो ए बी पाथ एंड वॉल्यूम एक्सिस के बीच जो एरिया फॉर्म होता है, एरिया हमने सपोज किया ए बी डी, उस एरिया के द्वारा भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 6000 जूल ही होगा. In last problem 13, a gas is taken along the path AB as shown in figure 26 E8, that is in PV diagram. If 70 calorie of heat is extracted from the gas in the process, calculate the change in the internal energy of the system. इस प्रॉब्लम में एक गैस को उसके इनिशियल पॉइंट ए से, दैट इज इनिशियल पोजीशन ए से अनदर पोजीशन बी तक ले जाया जाता है एलोंग पाथ ए बी, जिससे कि उस गैस का वॉल्यूम 250 सीसी से डिक्रीज होकर 100 सीसी हो जाता है, जबकि प्रेशर 200 किलो पास्कल से इंक्रीज होकर, जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है 200 किलो पास्कल से 500 किलो पास्कल, दैट इज देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस विच इज रिप्रेजेंटेड इन पीवी डायग्राम, जिसे पीवी डायग्राम में दैट इज फिगर 26 E8 में रिप्रेजेंट किया गया है. इस प्रोसेस में 70 कैलोरी हीट को गैस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गैस से निकाला जाता है. तो यहाँ पर जो हीट अमाउंट ऑफ हीट 70 कैलोरी यह गैस से निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है, यह अमाउंट ऑफ हीट भी निगेटिव होगा एंड वर्क डन भी निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर गैस का वॉल्यूम 250 सीसी से रिड्यूस होकर के 100 सीसी हो जा रहा है, जब प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है 200 किलो पास्कल से 500 किलो पास्कल तक. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन in this process. So work done in this process will also be negative, because there is contraction in the volume of the gas, that is there is work done on the system. So it is given amount of heat extracted from the gas, delta Q, say delta Q equals to minus 70 calorie, and in terms of joule it is minus 70 multiplied by 1 calorie is 4.18 joule, which can be nearly equal to 4.2 joule after rounding off. So it is 4.2 joule. So minus 70 multiplied by 4.2, जीरो से डिसिमल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दैट इज 42/10. सो इट इज माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 42, इट इज माइनस 294 जूल, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैस. जो हीट गैस से एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया, लिया गया, वह कैलोरी में 70 कैलोरी है, एंड नेगेटिव साइन इसलिए यूज किया गया है कि गैस को सिस्टम से निकाला गया है, तो गैस के अमाउंट में कमी होगी, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर यूज किया गया है, और इसे कैलोरी को जूल में बदल दिया. माइनस 70 मल्टीप्लाइड बाई 1 कैलोरी इज आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट इज 4.2 जूल एंड इट इज माइनस 294 जूल. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस, दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम. वर्क डन भी यहाँ निगेटिव होगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम 250 से रिड्यूस होकर के 250 सीसी से 100 सीसी हो रहा है. तो वर्क डन निकालने के लिए एक तो हम प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ डिक्रीज इन वॉल्यूम से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वहाँ पर प्रेशर का दो वैल्यूज है प्रेशर एक्सिस पर, जो प्रेशर को एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि वॉल्यूम को सीसी में वाई एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया है, प्रेशर को एक्स एक्सिस के लॉन्ग किलो पास्कल में रिप्रेजेंट किया गया है. तो वर्क डन अलोंग पाथ ए बी, और इन द प्रोसेस ए बी इज एवरेज प्रेशर, इट इज 200 प्लस 500 upon 2 into 10 to power 3 out of the bracket Pascal multiplied by change in volume, that is decrease in volume. Final volume is 100 cc and minus initial volume is 250 cc. So 100 minus 250, sorry, 100 minus 250, okay.
cc. In meter cube it is 10 to power minus 6 out of the bracket 10 to power minus 6 meter cube. So we will get the work done on the system which will be negative because it is negative. So work done after calculation we get work done on the system. Delta W is equal to minus 52.5 joule. And alternately area under alternately the area or the region between this line, that is AB, that is path AB and volume axis, it is a trapezium. So work done in this process, that is AB, is area of this trapezium which can be sided. इस ट्रिपीजियम को साइडेड किया जा सकता है जो कि path AB, that is line AB, and corresponding volume A point के corresponding volume 250 cc and B के corresponding volume 100 cc है. तो two values of volume y axis के along volume axis पर and this line that is path AB के बीच जो enclosed region है वह एक ट्रिपीजियम का फॉर्मेशन हो रहा है. तो इस एरिया ऑफ ट्रिपीजियम से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन. तो दोनों मेथड से कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड से वर्क डन अलोंग AB, वर्क डन ऑन द सिस्टम अलोंग AB इज एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई change in volume, that is decrease in volume. Average pressure is 200 kilopascal plus 500 kilopascal by 2, that is 700 by 2, that is 350. 350 multiplied by 10 to the power 3 multiplied by change in volume is final volume 100 cc or minus initial volume 250 cc, that is minus 150 cc. So it is minus 150 multiplied by 1 cc is 10 to power minus 6 meter cube and it is 10 to power minus 3 से minus 6 का minus 3 पावर कैंसिल होकर के minus 3 बचेगा एंड 0 350 का 0 150 का 0 2 0 भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा minus 3 के minus 2 पावर से. तो यहाँ पर केवल minus 1 पावर 10 to power minus 1 बचेगा एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 35 into it is minus, since volume is decreasing, volume चूंकि रिड्यूस हो रहा है. So work done on the system. So 35 multiplied by 15, we can after multiplying we obtain it as 5 to 5. So it is minus 5 to 5 multiplied by 10 to the power minus 1. So it is minus 52.5 joule. That is work done in this process. That is work done along path AB is minus 52.5 joule, while 70 calorie of it is extracted from the gas which is minus 294. In terms of joule it is minus 294 joule. So change in internal energy of the system delta U is equal to delta Q minus delta W. यहाँ पर वर्क डन भी निगेटिव है. WAB is delta W. It can be also written as WAB और delta W. So दोनों निगेटिव ही है. तो इसलिए change in internal energy delta U of the gas is delta U is equal to delta Q minus delta W. Since delta Q बराबर is equal to delta U plus delta W according to the first law of thermodynamics. But we can calculate this work done along, that is work done along path AB as area of the trapezium formed between path AB and corresponding volume axis. तो इस पाथ AB एंड वॉल्यूम एक्सिस के बीच में जो साइडेड पोर्शन से हमने रिप्रेजेंट किया है और इसका नाम दे सकते हैं ट्रिपीजियम का AB से CD. सो अल्टरनेटली अनदर मेथड से अल्टरनेटली वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज W और डेल्टा W इक्वल्स टू area of the trapezium, that is 1 by 2 multiplied by sum of parallel sides. Parallel sides is
dA and CD, that is 200 kilopascal plus 500 kilopascal, that is 200 plus 500 kilo is 10 to power 3 out of the bracket 10 to power 3, 200 plus 500 into 10 to power 3, 200 plus 500 bracket close multiplied by out of the bracket 10 to the power 3 किलो पास्कल को कन्वर्ट कर दिया पास्कल में, मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स हो गया। ट्रिपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स इसमें कौन हो गया, डी ए एंड सी बी, जो ट्रिपीजियम फॉर्म हो रहा है पाथ ए बी, लाइन ए बी और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में। तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट वॉल्यूम एक्सिस पर डी है जो कि 250 सीसी को रिप्रेजेंट करता है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सी है जो कि 100 सीसी को रिप्रेजेंट करता है। तो एंड यहाँ पर चूंकि गैस यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, गैस कंप्रेस हो रही है, गैस का वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यह वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। और यहाँ पर जो सी डी है मतलब टू पैरेलल साइड्स तो हो गया सम 200 प्लस 500 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 10 to power 3 किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज सी डी which is change in volume, that is change in volume is 100 minus 250, that is minus 150. So it is minus 150. This is distance between two parallel sides of the trapezium, minus 150 multiplied by 10 to the power 10 to the power minus 6. Again we get the same result, that is delta W is equal to minus 52.5 joule. So we have obtained work done on the system in this case. We have work done in this process AB as minus 52.5 joule from both methods. Now using the first law of thermodynamics, we have change in internal energy of the system, delta U is equal to delta Q minus delta W. Delta Q heat taken from the gas is minus 294 joule in terms of joule. In terms of calorie it is 70 calorie. So it is minus 294 minus, and work done in this process is, work done is also negative since work done on the system, minus 52.5. So minus 294 in place of delta Q, and that is heat taken from the extracted from the gas, and work done on the system is, work done is also negative. So it is minus 52.5. So minus 294 minus under bracket again minus 52.5, and it is minus 294 plus 52.5 minus 294 plus 52.5 is minus, it is minus 2, it is minus 241.5 joule, 241.5 joule. J, symbol of joule is J, answer. So change in internal energy of the system is also negative because heat is extracted or taken from the system, and the change in internal energy of the system is also negative, and it is equal to minus 241.5 joule, and this is the answer of this problem. Now this video is completed. In coming videos I will upload the videos of MSc Physics courses, BSc Part 3 Physics, BSc Part 2 Physics, BSc Part 1 Physics, 11th Physics, remaining topics videos, besides concepts of solutions to concepts of physics, that is C Verma Book 1 and Book 2. Thanks all of you for watching my videos.